How are you? I hope you all are well and healthy. Now, in this class, we will learn about coke, coal tar and coal gas. In the previous classes, we have discussed about coal. Now, today we will learn about what is coke, coal tar and coal gas. So, first we will discuss about coke. So, come to the point. Coke, it is a tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. ये टफ पोरस में छिद्रयुक्त और ब्लैक कलर का होता है. ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध रूप माना जाता है. कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. कोक का यूज हम स्टील बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत सारी धातुओं के शुद्धिकरण या निष्पादन के लिए करते हैं. एक्सट्रैक्शन होता है उसको अलग करना, किसी भी मिक्सचर में से किसी मेटल्स को अलग करना, शुद्ध करना, so that is called extraction. Now second is coal tar. Coal tar, it is a black thick liquid with an unpleasant smell. ये भी ब्लैक कलर का होता है. thick में मोटा लिक्विड with an unpleasant smell मतलब गंधहीन. इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अनप्लीजेंट होती है. It is a mixture of about 200 substances. कोल tar लगभग 200 पदार्थों का 200 पदार्थों का मिक्सचर होता है. प्रोडक्ट obtained from coal tar are used as starting materials from manufacturing various substances. Obtained product obtained from coal tar. coal tar से obtained प्राप्त किए गए जो भी प्रोडक्ट है उनका यूज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग various substances used in everyday life in industry. इनका यूज हमारी डेली लाइफ में